Assalamualaikum students. In this video I will discuss the MCQs of the ENT. Question number 1, the most common diagnosis in a young boy with a history of the profuse nasal bleeding. ये क्या होगा, एक यंग बॉय है और जो ना क्या था कि जो ना profuse history है nasal bleeding की, likely it's a nasopharyngeal angiofibroma, which will be the juvenile one because he is very young. Next question, the tip of the nose is supplied by which nerve? It is जो ना आपके पास क्या supplied by the ophthalmic division of the trigeminal nerve, and उसमें भी जो ना आपके पास क्या उसकी ब्रांच आती है आपके पास क्या एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ द एंटीरियर ethmoidal nerve. Next year, 43-year-old man reporting reduced hearing loss in right ear for past 2 years, and the RNA test without masking reduced positive in right ear and positive on the left ear. With the Weber's test, the sound is lateralized to the left ear. Which of the following is most likely जो ना आपके पास क्या डायग्नोसिस? जो वेबर या तो जो ना आपके पास क्या लेटरलाइज होती है, जहाँ पर आपके पास क्या जाए तो कंडक्टिव लॉस होता है, ठीक है, और जो रनी टेस्ट होती है वो आपके पास क्या पॉजिटिव होती है, किसमें जो ना आपके पास क्या रिड्यूस पॉजिटिव है ऑन द राइट साइड एंड पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट साइड. सो अगर लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव है तो वहाँ पर आपके पास क्या या तो नॉर्मल ईयर होगा या तो आपके पास क्या वहाँ पर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा, ठीक है. एंड यहाँ पर क्या है, इसमें रिड्यूस पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, या तो नॉर्मल होगा या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा. एंड वेबर लेटरलाइज हुई है कहाँ पर, लेफ्ट ईयर में. सो लेफ्ट ईयर इज़ द नॉर्मल, राइट ईयर विद द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. Next, a patient is most likely experiencing the pain due to the infection of the ethmoidal air sinuses, and so उसका ethmoid का पेन कहाँ पर होता है, between the eyes होता है. Next, sensory transducing cells that fire both graded potential and action potential are found in the olfaction. Next है हमारे पास which of the following the most common site of the cancer in the ओरल कैविटी. मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड में टंग है, ठीक है, हमारी कम्युनिटी में बक्कल म्यूकोजा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन बेनाइन नेक्रोसिस ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, विच इज इट इज प्लेयोमॉर्फिक एडेनोमा. नेक्स्ट है एपिथेलियम लाइनिंग द पैरानेजल साइनसेस, इट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कलमनर. स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कलमनर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 50-year-old मैन has developed the lymph node in the upper cervical region, and on examination his upper digestive tract failed to show any primary lesion. He is a smoker and drink alcohol as well. The most frequent step to diagnose CT scan करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास 32-year-old स्मोकर हॉर्सनेस के साथ आया ऑलमोस्ट अ मंथ हो गया, एंड ही इज़ नॉट he doesn't complain of the dysphagia in the cuff. The step to reach the next step कौन सा होगा इसमें, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ हॉर्सनेस है तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, विजुअलाइज करने के लिए लारंगोस्कोपी करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड सप्लाई ऑफ द लेटल्स एरिया इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट ग्रेटर पैलेटाइन एंटीरियर ethmoidal और द सेप्टल ब्रांच ऑफ द पैलेटाइन. सेप्टल ब्रांच होती है पैलेटाइन स्फीनोपैलेटाइन की, नॉट द नेजल ब्रांच ऑफ द स्फीनोपैलेटाइन. यहाँ पर क्या है केजलबेक्स एरिया की वो पूछी हुई हैं, ठीक है, कि वो कौन सी जो ना आर्टरीज आगे बनाती हैं वो, ठीक है. नेक्स्ट ईयर 35-year-old मैन कम विद द कंप्लेन ऑफ द डिफिकल्टी इन द ओपनिंग माउथ एंड बर्निंग सेंसेशन इन द ओरल कैविटी. ही हैज़ बीन हैबिट ऑफ गुटका च्यूइंग फॉर 7 months. द डायग्नोसिस ऑफ submucosal oral fibrosis. What is pathology? Epithelium show the ATP of the mouth mucosa. Has oral epithelium show the atrophy is characterized by the deposition of the fine fibrillar collagen in the lamina propria. या this is true. इसमें फाइब्रोसिस होती है, सो यहाँ पर कोई मतलब क्या कोलेजन की क्या होनी चाहिए, डिपोजिशन होनी चाहिए. सो इट विल बी द कोलेजन डिपोजिशन इन द लैमिना प्रोपिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव सीन अ 45-year-old लेडी विद ल्यूकोप्लेकिया. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू इज अ होमोजेनस अपीयरेंस. ल्यूकोप्लेकिया की आपके पास क्या होमोजेनस अपीयरेंस होती है. नेक्स्ट है 45-year-old male patient in the history of the pawn chewing and diagnosis the case of the squamous cell carcinoma of the oral cavity. The classified is involvement of the masseter muscle using TNM system. इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, बाई TNM सिस्टम से, ठीक है. नेक्स्ट है रिगार्डिंग द सबम्यूकोस फाइब्रोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द करेक्ट. सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस में क्या चीज़ करेक्ट है. मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन 25% ऑफ द केसेस. इट इज़
due to the repeated infection of the soft palate, a dietary deficiency of vitamin C and E role play करती है etiology में, and the mainly involve the cheek mucosa and the soft palate. Yeah, this is true. It involves mainly the cheek and the soft palate. Next, a 16-year-old male patient was operated for enteroconal polyp by using the endoscopic technique, and after 1 month the patient again developed a same sign and symptom. Now you have advised Colwell Luke or surgery after giving sublabial incision and lifting the soft tissue from anterior wall of the maxillary sinus. That is the surgical landmark for entering the maxillary antrum. Surgical mark कौन सा होता है maxillary sinus में? It is canine fossa. Next है patient of the जो ना उसका Ludwig angina in OPD आया, you ask for case in the history of recurrent tonsillitis, injuries to the oral mucosa or the dental infection. Dental infection very important thing होती है history में in Ludwig angina because they predispose the Ludwig angina, so it will be the dental infection. Next है हमारे पास submucous oral fibrosis is a precancerous condition. The percentage of the transformation into the malignancy is 3 to 7% होती है. Next question, our patient presents with the laryngeal papilloma and the most important treatment is laryngeal papilloma में CO2 लेज़र करते हैं. Next है हमारे पास sensory nerve above the level of vocal cord is the superior laryngeal nerve. Next है the steroid is a component of glottic carcinoma की होती है. Next abductor of the vocal cord is a posterior cricoarytenoid muscle होता है. Which is the commonest malignant tumor of the larynx? It is squamous cell carcinoma. Most common site for the mucocele is the lower lip. The most commonest indication for tracheostomy in adult is upper airway obstruction. Yeah, this is true. Next, the most dangerous late complication of tracheostomy. Most dangerous भी है और क्या है late है. It is tracheoesophageal fistula. Next, 36-year-old dynamite explorer experienced severe giddiness and the dizziness associated with the vomiting for the last 3 months, and this was episodic and occurred with tinnitus. The most clinical diagnosis is Meniere's disease. Dizziness, episodic tinnitus मतलब क्या episodic था और जो ना vomiting भी हो रही थी, it will be the Meniere's disease. Next, the 2-year-old boy has repeated attack of the acute suppurative otitis media. The most likely उसमें जो ना बस क्या predisposing factor कौन सा होता है? Adenoids होते हैं. Next, a 24-year-old female POBs present कर रही है fever, trismus, swelling pushes the tonsil medially and spreading laterally posterior to the middle of the sternocleidomastoid, having the history of the tooth extraction for a few days back for dental caries. यहाँ पर क्या चीज़ आनी चाहिए आपके पास? क्या यहाँ पर लुडविग एंजाइना भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो है ना पैराफेरेंजियल एब्सेस क्या है? इट इज़ ट्रू बिकॉज जो इसकी लोकेशन है वो आपके पास क्या डिफरेंट है देन द लुडविग एंजाइना. ठीक है, इट विल बी द पैराफेरेंजियल एब्सेस. नेक्स्ट है 5-year-old बिकॉज दोनों में जो ना आपके पास क्या डेंटल एक्सट्रैक्शन की, उसमें डेंटल कैरीज की, दोनों में जो ना आपके पास क्या वो रिस्क फैक्टर होता है दोनों के लिए है. A 5-year-old female come with the bilateral nasal polyps. You have planned the FESS. Which endoscopies मतलब क्या degrees you prefer? 0, 30 and the 70 degree prefer करते हैं. Next question है हमारे पास. Patient come with the history of the bilateral nasal obstruction 3 years से है. उसको history दी allergic to the dust and headache and clear rhinorrhea. You suspect in the allergic fungal sinusitis. Suspect किया है. The most statement describe the pathogenesis of allergic fungal sinusitis. जो फंगस की वजह से एलर्जिक साइनोसाइटिस होता है उसमें क्या होता है? इट्स अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी टू द फंगस. टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है टू द फंगस, उसकी वजह से एलर्जिक जो ना उसका फंगल साइनोसाइटिस होता है. नेक्स्ट ईयर 20-year-old लेडी कम विद द एपिस्टैक्सिस. यू परफॉर्म द एंटीरियर पैकिंग द पार्ट ऑफ द नोज. यू विल पैक द होल नेजल कैविटी को पैक करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 20-year-old फीमेल पेशेंट कम विद द कंप्लेन ऑफ द रिकरेंट सेंसरी न्यूरल और seasonal rhinorrhea, sneezing and nasal obstruction. You have diagnosed the patient with the allergic rhinitis. Which of the following will be the clinical picture of the
nasal mucosa. It will be the pale in the swollen. This is a repeated question. And next, a patient come to your OPD with the complaint of rhinorrhea. You are suspecting the allergic rhinitis and send the nasal secretions to the pathologist for microscopic examinations. Which of the following cell will be the abundant in the secretion? Eosinophils will be the high in the number because it's an allergic reaction. Next, which of the following is not a method of the tonsillectomy? Radiofrequency coabdation, tonsillectomy, and cryosurgical technique. Cryosurgical is technique is not a method for the tonsillectomy. Next, a unilateral blood strained discharge is a characteristic of a rhinolith. Unilateral blood strain या फिर foul smelling discharge is a characteristic of a rhinolith. Next, the commonest cause of the recurrent laryngeal nerve palsy is iatrogenic होता है due to the thyroid surgeries में होती है mostly, so it will be the iatrogenic. Next, the commonest benign salivary tumor is benign pleomorphic adenoma होता है या midline swelling moving on tongue protrusion पर कौन move करता है? thyroglossal duct cyst करता है. While deglutition पर आपके पास क्या चीज़ move करती है? thyroid masses like जो आपके पास क्या goiter move करता है. Then next है chief symptoms of the acute laryngitis is hoarseness. Next question है हमारे पास, what is the treatment of choice of Ludwig angina? It's incision and drainage plus antibiotics. Next है indirect laryngoscopy mirror is warmed just before use for. इसको warm क्यों करते हैं? To prevent the fogging जो ना होगा इसका, ठीक है. So it will be the anti fogging measures के लिए उसको हम warm करते हैं mirror को, ठीक है. Next question is the commonest site of the oral carcinoma in our population is buccal mucosa, ठीक है. Next है the secondary Sjogren syndrome is consist of keratoconjunctivitis, Zika, xerostomy and connective tissue disorder. This is a repeated question. Next है chances of the regional lymph node mets are highest in the cancer of nasopharynx में highest chances होते हैं cancer में. Next है 40-year-old teacher presents with a vocal nodule. The most therapeutic measure is, वो एक टीचर को क्या होना चाहिए? उसके वॉइस को रेस्ट देनी चाहिए ताकि उसको जो ना वो ठीक हो जाए वोकल नोड्यूल. नेक्स्ट है विच एरिया पोटेंशियली डेवलप द कार्सिनोमा इन द प्लमर विंसन जो ना आपका इसका सिंड्रोम. इट्स पोस्ट क्रीकोइड था जो ना आपका इसका कार्सिनोमा. नेक्स्ट है द फ्रेश सिंड्रोम इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ, इट इज़ अ पैरोटिड सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन होती है. उसके बाद आपके पास क्या जो ना एक्सेसिव सलाइवेशन होती है उसमें, ठीक है, फ्रेश सिंड्रोम. नेक्स्ट है द सलाइवरी कैल्कुलाई आर मोस्ट कॉमनली सीन इन सबमेंडिबुलर ग्लैंड में मोस्ट कॉमनली सीन होते हैं सलाइवरी कैल्कुलाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है 28-year-old लेडी हैविंग एट्रोफिक राइनाइटिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेजल प्रिपरेशन यू विल एडवाइस. 25% ग्लिसरीन ग्लूकोज इन ग्लिसरीन देते हैं ताकि उसको जो ना उसमें क्रस्ट बन जाते हैं एट्रोफिक राइनाइटिस में, तो उनको वो कर सकते हैं, मतलब क्या सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है द प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस इज कॉमन इन फीमेल अराउंड द प्यूबर्टी, मोस्ट कॉमन होती है फीमेल में. नेक्स्ट है 35-year-old लेडी प्रेजेंट्स विद द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द नेजल स्वेलिंग ऑन एंटी राइनोस्कोपी. There is a granulation tissue in the posterior part of the septum which test will be diagnostic. It will be the CT and the paranasal sinuses. Next, a 32-year-old female having atrophic rhinitis is not responding to conservative treatment. Which option is the most appropriate? Atrophic rhinitis में एक ऑपरेशन करते हैं जिसको हम यंग ऑपरेशन कहते हैं, so it will be the यंग्स ऑपरेशन. Next है Kehat's notch is seen and it is seen in the osteosclerosis. Next, the most common cause of the facial paralysis is the Bell's palsy. Bell's palsy उसका common cause होता है. Next question है हमारे पास epiglottis is a leaf-like yellow elastic cartilage from wall of laryngeal inlet. It forms the anterior wall of the laryngeal inlet. Next, the laryngeal diphtheria is secondary to the facial diphtheria, affecting the below age of the 10 years. Next, a young boy came with the history of being slapped on right side by other person during the fight last night, and now he is complaining in the decreased hearing
हाउ विल यू मैनेज, इसमें जो है आपको इसका टिम्पैनोप्लास्टी करेंगे, ठीक है, बिकॉज उसमें क्या होता है, रप्चर हुआ है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, ठीक है, स्लैब की वजह से ट्रॉमेट का रप्चर होगा. नेक्स्ट है पेशेंट विद द रिकरेंट एडेनोइडाइटिस and came to ENT department with the complaint of the gradual decrease in the hearing for more than 2 months. Which investigation will you advise? इसमें बेरा करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट है मेजर नर्व ट्रेवर्सिंग द मिडल ईयर इज द फेशियल नर्व. नेक्स्ट है द टाइप बी टिम्पेनोग्राम इज सीन इन सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया में सीन होता है टाइप बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेस एंसरेनस और द गोस foot is used for branches of which nerve. पेस एंसरेनस उसको फेशियल नर्व की जो ना उसको जो ना ब्रांचेस के लिए उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, सारे उसको बोलते हैं. नेक्स्ट है 10-year-old boy suffering from acute painful swelling in neck with chronic discharging ear for last 5 years and swelling extend behind the mandible and external ear full of granulation. The most diagnosis is it's a basal sepsis. ये भी repeated question था, इसको CSOM पहले से ये उसकी complication होगी basal sepsis. Next day, a 4-year-old girl is brought to the emergency department after her parent suspected that her daughter has inhaled a peanut. Chest X-ray show a collapsed lung. How will you manage? यहाँ पर लंग्स में जो है ना आपके पास क्या वो पीनट चला गया है, उसको उसमें क्या करेंगे, हीमलिश मेनूआ करेंगे, ईसोफेगोस्कोपी या फिर फॉरेन बॉडी को वहाँ पर रिमूव करेंगे, रेगुलर बैक स्लैप्स करेंगे या फिर रिजिड ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, रिमूव करेंगे. लंग्स में तो क्या करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी एंड रिमूव करेंगे. नेक्स्ट ईयर 48-year-old female patient presents with the history of the pan tobacco chewing and developed the marginal ulcer for last 2 months. He is also complaining of the epilateral earache. What is the investigation of the choices में CT scan of the leg करेंगे, because due to the refer pain हो सकता है वहाँ पर ईयर में ना, तो we'll do check the जो ना वहाँ पर नेक में कोई ट्यूमर तो नहीं है, बिकॉज देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ द टोबैको च्यूइंग एंड हीज ओल्ड एज, मतलब कि 48 ईयर्स है उसकी एज. नेक्स्ट है पेशेंट एड हिस्ट्री ऑफ द डेंटल इन्फेक्शन develop marked difficulty in the swelling with the trismus floor of the mouth swollen and tongue seems to be pushed back up and submandibular region becomes swollen, tender and impact woody hard feel. It's a Ludwig angina. यहाँ पर डेंटल इन्फेक्शन था, लेकिन यहाँ पर जो लोकेशन थी एज़ कम्पेयर टू द पैराफेरेंजियल एब्सेस जो पहले हमने किया था, सो वहाँ से इट विल बी द लुडविंग्स एंजाइना. लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 32-year-old फीमेल हैविंग द एट्रोफिक राइनाइटिस नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट. यहाँ पर क्या करेंगे, ऑपरेशन, यंग्स ऑपरेशन करेंगे एट्रोफिक राइनाइटिस में, ठीक है. सो इट्स कंप्लीटेड.